Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम लेकर आए आपके लिए आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें। हम उन खबरों पर चर्चा भी करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उद्यन जी। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ में शुरुआत करते हैं। लालिमा। Thank you, Nikhil. Yes, the headlines first. Key domestic indices log marginal losses. Sensex finishes below 65,900 level. Nifty ends below 19,600 points. Global stocks trade mixed ahead of Thursday's US inflation report. And oil prices fall more than 1.5% after data showed that China's imports and exports fell much more than expected in July. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली गिरावट। सेंसेक्स 65,900 से नीचे और निफ्टी 19,600 अंक से नीचे बंद हुआ। बृहस्पतिवार को अमेरिका की मुद्रास्फीति रिपोर्ट आने से पहले वैश्विक शेयर बाजारों का मिला जुला रुख और जुलाई में चीन के आयात निर्यात डेटा में गिरावट को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में 1.5% की कमी आई। Market Mantra. और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम शेयर बाजार की खबर के साथ में। घरेलू शेयर बाजार आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,900 अंक के स्तर से नीचे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,600 अंक से नीचे रहते हुए बंद हुए। दोनों ही शेयर बाजारों में वैश्विक रूप से प्राप्त हुए मिले जुले संकेतों के बीच गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 107 अंक लुढ़ककर 65,847 अंक के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक नीचे रहते हुए 19,571 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार पर नजर डालें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स आज 0.15% बढ़त में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.25% की तेजी दर्ज की गई। The key domestic share indices today logged marginal losses. The BSE Sensex finished below 65,900 level, while the NSE Nifty ended below the 19,600 points. Both indices fell amid mixed cues from global stocks. The BSE Sensex declined 107 points to trade at 65,847. NSE Nifty also fell 26 points to settle at 19,571. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.15%, while the small-cap index gained 0.25%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 10 companies appreciated while 20 declined. Tech Mahindra surged 1.8%, Wipro climbed 1.3%, and Bajaj Finance advanced 1%. On the other hand, Power Grid slumped 2.6%, followed by Mahindra & Mahindra declined 1.8%, and JSW Steel fell 1.5%. In sectoral indices at the BSE, 6 sectoral indices rose while 14 logged losses. Among the top gainers, consumer durables rose 0.7%, while finance and banking both added up to 0.4%. On the other side, telecom and metal both appreciated 0.9%. The overall market breadth was positive as shares of 1,813 companies appreciated and 1,802 companies declined. A total of 140 shares remained unchanged. So, then what do you have to say to that? Sensex declining by 107 points to trade at 65,847, but mid-cap index rising 0.15% and small-cap index gaining 0.25%. What is your view? There's a lot of interest in mid-cap and small-cap, and that's
That's probably understandable because most of the large investors, institutional investors, already have an exposure in some of these, not some, all of these large cap, sort of prominent stocks. So they have obviously moved in and gone there. The other noteworthy point is that obviously the data is to be seen, but foreign institutional players have been sellers and domestic institutional investors have been buyers in the last quite a few sessions. So I wouldn't be surprised if the data probably indicates something to that effect. But possibly what's happening, Lalima, is the market is probably waiting for some really solid cues. It's probably waiting for Thursday, where they will get some idea about inflation data from the US and then also from the RBI. Yeah, there's a meeting on 10th. Yeah, so that data, more so from the US, because from that data they will be able to get a sense of just how much longer would US Federal Reserve be increasing the rates, because we know that that's a most important cue. What market seems to be wanting to believe. They want to believe that the era of rate hikes is probably coming to an end, or it has come to an end. They're looking for evidence. If they see something dramatic to the contrary, then there will be an adverse reaction. Otherwise, you can expect this to go on. And some of the results in the US are not all that bad. They're okay. They're pretty good, actually. Some of the results that we are getting in our country, in India, are not bad at all. They're pretty good. But there are areas where things are not so good. If you look at rural FMCG consumption, that's one area. There are some other spaces where things are not that great, but there are also other areas where things are going pretty nicely. So all in all, that's why you're seeing the market hold its own. Yes. 65,847 is a pretty decent number. I mean, if somebody had just woken up, I mean, last year, I keep talking about this in the program, somebody went off to sleep around same time last year and woke up a year later and he compares the index, he'll be pretty happy about it. But there are, it's not as if with a broad brush stroke you can say things. There are things happening, positive and negative, in areas, and so an investor who's listening to this program, probably one takeaway is that you have to see what's going on and then actually take it's not a high tide where everything will go up. So those days are probably behind us, and it's before what used to happen, typically, Lalima, what happens for some high risk, you get a high reward, but there's a downside to it. So when in the just pandemic period where there was a lot of cash getting pumped into the global system, it was like water. So it was lifting up all the boats. Now that is now gone, and you're having some places the water is still, somewhere it's choppy. So you have to navigate. You have to be a better sailor. There are skills coming in. Risk management is coming in. So those things are becoming important. Two corollary questions. Mid cap and small cap rising. Is it a sign of investor confidence? Secondly, is there the talk of recession now behind us? It's behind us. Is that? See, recession, obviously nobody's talking about it at all. At all, yeah. I mean, in India... No, global. I meant global. Global, that is where the point is. I mean, there are still people in the US who are adamant that there will be a so-called hard landing. The other people are saying that when is that exactly going to happen? And we have been waiting for it to happen for about a year. Yes. And there is nothing, Lalima, if you look at, people are still spending money. People, those jobs are still getting created. Unemployment rate is not all that high. We are talking about the US. Yes. In our country, of course, I mean, look at the stock markets, look at economic growth. 6% plus is not what we would need. We need 8.5. Remember, we are 1.4 billion. So it gets distributed with so many number of people. So we need that. We need much more. But there's only so much we can do it internally at the moment, because we also are dependent on our external markets. Roughly 20%, 25% of some of our
action, GDP action, I'm not talking about export, action is dependent on global trade. We have to import things, we have to export things, and if our imports get disrupted or exports get disrupted, and those disruptions are happening. You recently saw about rice exports, Yes. other things. So those things will keep happening, and in terms of the talk about a recession is reducing at least in the US. Maybe there are some other countries where that's happening, but it hasn't materialized. That fear that people are saying, and that is one of the reasons you're also finding some of these Western markets doing well, because it is not coming up. What's coming up, which is surprising, is China is somehow not doing as well, which you read out in the headlines. Right. And people are trying to figure out what's going to happen, simply because it's a pretty large, it's an economy which is roughly 6 times India's size. Indian economy's size. So that's a big engine. So US and China, they pull the global economy. If one of the two is not doing well, then it has implications for us. So we cannot say that just because things are not going on well for our eastern neighbor, that necessarily means everything is going to be better for us. It opens up opportunity, but then there are people who do business out there from India. And when you're part of a global chain, you do get affected. So, something happening in one corner of the world no longer insulates another country in another corner. उद्यन, अभी आपने आरबीआई एमपीसी बैठक का जिक्र किया था, जिसके फाइनल रिजल्ट्स तो हमें 10 तारीख को ही प्राप्त होंगे, लेकिन अभी फरवरी के बाद से रेपो दर 6.5% पर चल रही, जिसके बदलने की बहुत ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं कि शायद इसको बढ़ाया जाएगा। लेकिन बिजनेस के लिहाज से देखें तो अभी हमारे पास 2 दिन हैं, कल और परसों का। तो ऐसे में मुद्रास्फीति पर जो दबाव एक बना हुआ है, इसको किस तरह से कंट्रोल करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, खासतौर पर अगर जब हम एक बायर या सेलर की नजर से देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा असर हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत तगड़ा असर पड़ सकता है मार्केट पर। देखिए, मुझे मतलब ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, राय है। मुझे नहीं लगता कि आरबीआई इसमें कोई रेट हाइक या कुछ रेस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी एक्शंस लेने वाली है। सिंपली बिकॉज आपने जो पीछे किया था वो इतना ज्यादा किया था, उसका इफेक्ट नजर आने में वक्त लगता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो पहले हुआ नहीं। हर साल इसी मॉनसून के दौरान फूड प्राइसेस बढ़ती हैं और फिर वो नॉर्मलाइज भी कर जाती हैं। हम जानते हैं क्योंकि वेस्टेज होती है, ट्रांसपोर्टेशन में डिसरप्शन आती है, जहां पे ग्रोथ मतलब उगाया जाता है वहां पे डिसरप्शन आती है। तो एक सीजनल फैक्टर है, उसको लेके आप मार्जिन पे जब आप कर चुके हैं एक प्रोसेस को, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या मार्जिनल बेनिफिट क्या होगा एक रेट हाइक का, वो उतना हाई नहीं है। इनफैक्ट वो नेगेटिव है मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि वो ये करने वाले हैं और वो प्ले आउट करने देंगे जी। और अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है जिसकी वजह से बहुत फिक्रमंद होनी चाहिए। पर हाँ, कई लोगों का तो दूसरी तरह रुझान है, वो चाहते हैं कि रेट कट हो, वो तो उसके बारे में तो आप बिल्कुल ही भूल जाएं, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता कि वो फर्स्ट 3 months ऑफ 2024 में भी होगा। वो मतलब स्टार्ट पॉइंट शायद मई जून या उसके बाद होगा। तो हमें तकरीबन 1 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके हम रेट कट के बारे में सोच सकते हैं, मतलब बात कर सकते हैं। तो वो तो एलिमिनेट कर दीजिए, रेट हाइक भी एलिमिनेट कर दीजिए ऑलमोस्ट, मुझे लगता है। एंड मुझे लगता है कि वो बीच का जो रास्ता है जहां पे कुछ कमेंट्री होगी, कुछ छोटी मोटी टिंकरिंग होगी, क्योंकि आप यू डोंट फिक्स इफ इट एंड ब्रोक, ऐसे बोलते हैं, डोंट फिक्स समथिंग। अगर उसमें गड़बड़ी नहीं हो, बेकार में जाके उसको रिपेयर शॉप में ले जाने की जरूरत नहीं है। तो जहां पे वो चल रहा है, एक गति प्राप्त है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आपके करेंसी के फ्रंट में चैलेंज नहीं है। कमोडिटी प्राइसेस ईज हो रही हैं, जो कि अब पास ओवर किया जा रहा है कंज्यूमर्स को धीरे धीरे करके, प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, तो कई जगह में कर रही हैं। तो वो चैलेंजेस आपके पास नहीं है। इंटरेस्टिंगली एक बात और हो रही है कि ये नोटिस किया जाता है कैपेसिटी, मान लीजिए आप 100 गाड़ियां या 100 यूनिट्स बनाने की जो कैपेसिटी है, उसमें से अमूमन अधिकतर जगह में 80 के आसपास पहुंच रहा है, 80% कैपेसिटी। अगर ये 80 के ऊपर जाता है तो वो एक इंडिकेट करेगा कि आप नई कैपेसिटी लगाएं। तो इन्वेस्टमेंट का एक साइकिल आने की कई लोगों को उम्मीद है। वहां पे अगर आप रेट हाइक करेंगे तो फिर उसका सेंटिमेंट में आप एक इम्पैक्ट करने का खतरा तो बना देगा, क्योंकि आप जो इन्वेस्ट
कर रहा है वो तो हमेशा जब आप कैपेसिटी पे लगाते हैं आप लंबी अवधि के बारे में सोच के लगा रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो वो आप ऐसा उसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर ऐसा कुछ डेटा मिल जाता है आरबीआई को जो सामने आता है बाद में हमें पता चलेगा जिसके वजह से वो करने लगे तो कर जाएं, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बात है जिसमें अभी जो ट्रेजेक्टरी उसको छेड़ने की कोई जरूरत है। ये जो आपके फूड प्राइसेस का जो चैलेंज है ये सीजनल है, ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। टमाटर के नए जो हैं फसल आने में कितना टाइम लगता है, वो एक साल बाद थोड़ी ना आएगा। तो ये हमें ये देखना पड़ेगा और उस हिसाब से हम जो इन्वेस्टर्स हैं उसको निवेश कर सकते हैं। इसमें शेयर बाजार के लिहाज से अगर हम देखें और खासतौर पर पीएसयू बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और लगातार रिजल्ट्स भी अच्छे दिए हैं और इवन गवर्नमेंट ने भी ये बोल दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस अपना बढ़ा सकते हैं और जो लोन्स हैं वो भी लगातार बढ़ ही रहे हैं और खासकर रिकवरी भी ठीक ठाक हो रही है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि शेयर बाजार में इनकी परफॉर्मेंस लगातार खासतौर पर अब जो तिमाही शुरू होने वाली है इसमें अच्छी देखने को मिलेगी। देखिए कई लोगों का मानना है कि ऑलरेडी जो आप देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस और इंडेक्स में ऑलरेडी उनका जो अच्छा परफॉर्मेंस है, ऑलरेडी उनका जो अच्छा बैलेंस शीट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल्स है ऑलरेडी बेक्ड इन है। तो आप देखेंगे कई लोग कह रहे हैं कि क्यों और ये बढ़ नहीं रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो वो ऑलरेडी वो बढ़ चुका है और क्या वो आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। इकोनॉमी बढ़ेगी तो वो तो उसके साथ साथ चलता है ना। आप अब लोन देंगे तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा। डेट का जो डेट कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है तो वो बढ़ेगा, पर पीछे जो एक अनरिकग्नाइज्ड पोटेंशियल था कई लोगों का मानना है और मैं भी उस खेमे में बिलोंग करता हूं, मुझे लगता है वो अब बेक्ड इन हो चुका है। क्योंकि जो स्टार परफॉर्मर्स थे स्टॉक मार्केट से वो हमेशा प्राइवेट बैंक हुआ करते थे। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इतने अच्छे नंबर्स हैं, आप उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन देख लीजिए, आप उनके एनपीए देख लीजिए, ये कहाँ फिगर हुआ करते तो अब कहाँ है जी। और द पॉइंट इज वो अब और कितना करेंगे इस मतलब जिनको एक्सपोज होना था वो एक्सपोज हो चुके। इसका आप एक ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल में तो जाकर आप निवेश नहीं करेंगे, फिर आप उसको कैचअप करने देंगे और बिजनेस को आगे बढ़ने देंगे, फिर आप आएंगे। तो ये उसी लेवल पे रहेगा या थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहेगा, पर एक रनअवे जो ग्रोथ है वो वहां से मुझे अभी इमीडिएट फ्यूचर में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। Talking about the private sector versus the public sector banks, reports are that attrition rate in the private sector is higher and the public sector banks are getting, hiring more people. So that's a good sign. That they had kept it in abeyance for a long time. So it was like a big requirement they had. They were rationalizing, right sizing. Some of them have done M&A. Let's not forget all the challenges that they have undergone. And it's worth pointing out in a program like this that a lot of people say that private sector bank, public sector banks do things which private sector banks don't. So, it's not an apple-to-apple comparison. Yes, of course, investors are supposed to be agnostic. Wherever they will get better returns. But if you are making an academic comparison between the two, they have certain responsibility. They have a way of going about things. Because government is a primary or whatever major shareholder, it will take them in a particular direction. So they end up doing things, and importantly for our country and society, which private banks won't do it. And if they don't do it, nobody will. Yeah. So if they are doing financially well, I mean, their balance sheets are doing well, their things are looking up, then it's something which I think the listeners of this program should feel happy. Right. Right. We talked about auto. We talked about cars. थोड़ी देर पहले आपने गाड़ियों की बात की. Where do you see the auto sector going? The auto sector is doing well, perhaps except for the last 1 month because of the monsoon. And secondly, where do you see the IT sector going? Because it has had its own share of ups and downs. And now that the US economy seems to be stabilizing of sorts, if we can say that way, then is it better for our country's IT sector? Because the exports would be good for, especially to the US, Europe side. See, if you call having capability centers in India, if you call that part of IT exports, so that is going up. You have these centers which are giving backup to companies abroad. So that is doing well, and these are captives.
So that area is doing well, and it's getting reflected in your export figures. So there is no an ambiguity out there. Now, other things where we are talking about project pipelines, this whole game over digital transformation, artificial intelligence adoption, etc. Now, that's a game which a lot of others are also playing, and you're getting various reports from various companies. Somebody says, okay, people are now in certain verticals, say whatever. I'm just saying, top of that, say a particular industry, that vertical, people are being a little cautious. So it depends on which vertical these guys are in. That's how things are going to be. And then, of course, our currency is okay, and it's not misbehaved as far as IT is concerned. But IT does have a challenge. There's no doubt about it. And so that is where it is. In terms of auto, there are some players who are doing pretty well. If you look at one particular stock, say, I think Hero today, which is feeling really great about. It's got some really great information about one of their product launches. I think it's with Harley they've done. So you will get these pieces of good news. And component guys are also doing well. Their exports are also doing well. So that's also in the news. So there will be things that will do well. There will be pockets where you may have a challenge. Suppose in the rural countryside, the income levels, if they are not seeing a spike after this harvest, then you might just see a little bit of a challenge out there. So it's an unfolding story. There are pieces which are pretty good. There are pieces where the jury is out. You'll have to wait. So again, it's not a broad brush stroke with which you can make a conclusion. आगे बढ़ते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 82 रुपए 84 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 102.63 पर चल रहा था। और आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां पर आज मिला जुला रुख देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 0.4% ऊपर आ गया। सिंगापुर का स्टेट्स टाइम इंडेक्स मामूली रूप से 0.1% की बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग का हैंग सेंग 1.8% लुढ़क गया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक बिकवाली के दबाव में 0.3% गिरकर बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजारों की ओर चले तो समाचार तैयार किए जाने तक गिरावट का रुख था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का फुट्सी 100 0.9% की घाटे में चल रहा था। फ्रांस का कैक 40 1.4% नीचे आकर और जर्मनी का डेक्स 1.5% लुढ़क कर कारोबार कर रहे थे। And now look at the U.S. markets. While U.S. stocks finished higher yesterday, regaining some of the ground lost last week as investors added positions ahead of Thursday's highly awaited U.S. inflation report. The main stock indices ended last week lower as investors took profits after months of gains due to worries over economic data, mixed earnings and rising treasury yields. The Dow Jones Industrial Average rose 1.2%, the S&P 500 gained 0.9%, and the Nasdaq Composite Index added 0.6%. Before we go to US, Nikhil talked about China's economy. You also mentioned with China's economy not showing a very good picture. You said we will also be affected. It doesn't mean that we will be. It's something to it'll give us an advantage. How does it affect Indian economy if China sees a fall in its economy? See, as we know, there are a couple of things that are happening. One is Lalima, when do you spend money? When you're making when your income is growing, right? Yeah. One is through pay, okay. The other is from investment income. Income coming from investment, stocks, etc., etc. In China, the primary driver is not the stock market; it's the real estate, and real estate is in real mess. Yes. I mean, we could do a program on it. So that source of income or wealth is repressing or putting down sentiments consumers. So people would hold back. They're seeing their investments not doing well. They're holding back. So there are people like you and me who have bought 2 or 3 apartments. So that's not happening. Young guys are not getting jobs. So it's 25-28%. Youth unemployment. So 18 to 25, that bracket, they are not getting jobs. Fresh college graduates are not getting jobs. They are the people who spend the most. Yes. So suppose there are players who are tapping these markets in India, they will get affected. Even if it's a component, they'll get affected. If you are using a Chinese input to service another market, which we do,
Let's not forget, if I'm not wrong, our imports from China last year were 115 billion, right? So if I'm not wrong, I might be wrong, but that's a huge number. And we buy a lot of raw material for our we stuff. get a lot of, and it's been growing. So if that be the case, then our ability to service our domestic market and international market, they also get affected. Apart from that, if our government decides in the national interest to restrict certain things, then it only adds. So when you have a factory of the world getting affected, and you have, let's not forget, it's 1.4 billion. Yes. Their middle class is possibly much bigger than ours. So if anybody is servicing that market, even tangentially, even if it's one of the top 3 markets, you are getting affected. That doesn't mean it's a frontal thing, but it's chipping at the margins or at the sides. It'll impact. और आगे बढ़ते हैं। भारत स्टार्टअप उद्यमों, निवेशकों, इनक्यूबेटर्स और उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम शुरू करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की 7वें सम्मेलन में इसकी घोषणा की। देश में आए बदलावों का जिक्र करते हुए श्री गोयल ने स्टार्टअप इंडिया पहल के विस्तार का भी जिक्र किया। इस पहल के तहत देश में लगभग 1 लाख स्टार्टअप उद्यम शुरू हुए हैं। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के उद्योग मंत्रियों ने भी ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटीकरण, औद्योगिकरण, नवाचार, समावेशन और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। So then what do you have to say about this BRICS Startup Forum in 2023? Because we are the world's 3rd largest startup now. Yeah, absolutely. And how do you view this? I mean, not many people know that Russia also has its own ecosystem. China also has its own ecosystem. South Africa is a big economy. So if we, most of the times when we look at markets, we are looking at the Silicon Valley, we are looking at the UK and whatnot. These are also vibrant sort of centers, and if we can tap them, then what happens is it's always good to have a portfolio of markets and sources of capital and consumption. And let's take a look at the oil prices now. Oil prices today fell more than 1.5% after data showed that China's imports and exports fell much more than expected in July, in yet another sign of a sluggish post-COVID rebound for the world's largest oil importer. In intraday trade, Brent crude was trading at $84 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $80.60 per barrel when reports last came in. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 40 रुपए नीचे आकर 59,380 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सितंबर अनुबंध वाली चांदी 355 रुपए की गिरावट के साथ 70,915 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर नजर डालें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान समाचार तैयार किए जाने तक सोना सुस्ती के साथ $1,966.40 प्रति औंस पर था और चांदी भी लुढ़क कर $23.10 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। उद्यन जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Key domestic indices log marginal losses. Sensex finishes below 65,900 level. Nifty ends below 19,600 points. Global stocks trade mixed ahead of Thursday's U.S. inflation report, and oil prices fall more than 1.5% after data showed that China's imports and exports fell much more than expected in July. Well, that's all we have for you, friends, in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima, Aneja Dang, and Nikhil Kumar bidding adieu. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.